Hello everyone, welcome back. I am here to present this presentation on biotechnology. When we go to the complexes or malls, we see these off-season vegetables. और ये जो vegetables हम देख पाते हैं off seasons में, this is the magic of science. Then we observe that there are a lot of drugs which involves the science and biotechnology. Then we have some modified organisms, animals, genetically modified animals to fulfill the human need. So all this is possible because of this wonderful technology that is called biotechnology. And this is the need of the hour to know about biotechnology. और ऐसा नहीं है कि ये जो biotechnology विज्ञान है, science है, it is very recent science, it is very old or primitive science. लगभग 5,000 से 10,000 साल पुराना ये विज्ञान है. और जो बायोटेक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ और सेल्स का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन न्यू एंड बेटर गुड क्वालिटी क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल होते हैं. और ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच वाज डेवलप्ड बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1973, एंड दिस टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज coined by a Hungarian engineer Karl Erkey. So I will discuss about its introduction, its application, its scope one by one in this presentation. Let's start. Firstly, जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी ये कॉइन की है कार्ल एरिके ने इन 1917, जो कि एक हंगेरियन इंजीनियर थे. एंड दिस टर्म वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं टू मेक प्रोडक्ट्स और रन अ प्रोसेस such as industrial fermentation, which are beneficial for human beings. Then biotechnology begins when humans started to plant their own crops. Domesticated animals ferment juice into wine, make cheese and bread. So this is not a recent or new science, it is very primitive or old science, जो कि लगभग 5,000 से 10,000 साल पुराना है. And this technology explores the metabolic properties of living organisms. Metabolic जो properties है living organism की उसे explore करते हैं for the production of some valuable products of a very different structure and organizational level. तो ये जो biotechnology है इसमें हम living organism को use करते हैं to get maximum or useful products which are beneficial for humans. So what are the various applications of biotech? So there are a lot of applications, like we have important role in agriculture. So in agriculture, with the help of biotech, we can produce genetically modified plants, crop plants, or produce hybrids. We can use micropropagation. We can produce some biofertilizers or biopesticides, and we can do animal improvement to get best quality animals. And we can produce the crops which are disease or stress tolerant crops. Then in the field of healthcare, this biotech plays very important role. This recombinant DNA product, we can use various products of recombinant DNA technology. It can produce vaccines and diagnostics, monoclonal antibodies, stem cells, and tissue specific delivery methods. So these are various roles in the field of healthcare. Then it also helps to sustain the environment. We can produce some plants which can do remediation. That the term used is bioremediation or phytoremediation. Then it plays very important role in biosafety, and genetically modified organisms can play an important role in protecting environment. Then in industry, biotech plays very important role. It helps in production of various enzymes and various fermented products in which we use microbes. It is used in the field of bioenergy production, biofuel production, then bioinformatics and biomining. So these are various fields in which biotech plays very important role. Next, as we know that plants serve as an important source of primary and secondary metabolites, जो कि यूज़ होते हैं फार्मेसी में, बायोटेक्नोलॉजी में और फूड टेक्नोलॉजी में. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर डायरेक्टली यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं मेनली. जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमारे पास कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन्स आते हैं, एल्कलॉइड्स आते हैं, प्लांट टॉक्सिन्स आते हैं, लेक्टिन्स आते हैं, ड्रग्स आती हैं. सो वी कैन एक्सप्लॉइट बोथ दीज प्राइमरी एज वेल एज secondary metabolites for our benefit.
Biotech also helps in augmenting or modifying the quality of agriculture, horticulture, ornamental plants, and manipulating the plants for improved agronomic performance. तो हम बायोटेक से जो plants हैं उनको modify कर सकते हैं. We can improve those plants which are more resistant to disease, pests, and abiotic stresses. Then this technique, that is plant tissue culture. It is the most popular technique of plant biotechnology that I will discuss. So plant tissue culture, in which we can use any part of the plant, and from that plant or part we can produce a whole plant or number of plants. So that is called plant tissue culture. Next, branches of biotechnology. So firstly comes Blue-top Biotech. In this biotech, we obtain the maximum benefit from the aquatic animals or plants, including marine animals or plants. So we get a lot of product by using this blue biotech, like we have marine drug, biofuels, renewable energy sources, functional foods, then proteins, enzyme, bioactive compounds, and DNA fingerprints. Next branch of biotech is green biotech. It is mainly concerned with the agricultural applications to produce plants which are disease tolerant, which are resistant to various type of stresses and have greater yield. So this is known as green biotechnology. Next comes red biotech. So it is related to the production of medicines or vaccines to cure some deadly diseases, to increase the life of a human being. Then comes white biotech. It is mainly concerned with the industrial applications, in which there is production of various enzymes. We can produce various enzymes, and we can produce some fermentation based products. Food biotech, it includes food biotech and biotechnology, and bioenergy, biofuels. So we can get all the products by using this biotech. Next comes the basis of biotechnology. तो जो बायोटेक है, इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और दो मेजर डिस्कवरीज हैं जिसके ऊपर पूरा बायोटेक बेस्ड है. सो इट मोस्टली इन्वॉल्व्स कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ desired fragment of DNA. There are दो major discoveries जो पूरा बेस बनाती है बायोटेक्नोलॉजी का. The first one is presence of plasmid in bacteria, which is extra chromosomal DNA. जो कि extra chromosomal DNA, this is the chromosomal DNA that is also known as nucleoid or genophore in case of bacteria, genophore. So इसके अलावा जो extra DNA present होता है, circular DNA, that is known as plasmid. It is also known as F positive or fertility factor in case of bacteria. It contains a lot of genes. इसमें बहुत सारी genes present होती है. So it can undergo replication along with this chromosomal DNA or independent of this chromosomal DNA. So this is one of the major milestone in case of biotech. Second is discovery of restriction endonuclease, and the credit goes to three scientists, that is Werner Arber, Daniel Nathans, and Hamilton O. Smith. So these three scientists were given Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1978. The next person was Paul Berg, who is considered as father of genetic engineering. He was awarded Nobel Prize in 1980. So the science of recombinant DNA technology took birth when Cohen and Boyer in 1973 were able to introduce a piece of gene. उन्होंने एक जो piece of gene है that was inserted inside the plasmid of Escherichia coli. So this was the first time when recombinant DNA technology took birth. So the credit goes to Herbert Boyer and Stanley Cohen. So these were the basis of biotech. Next, there are various definitions of plant biotechnology. The first one is the technology that uses biological system, जो biological system और living organism को use करता है to create or modify products for a particular purpose. So that is known as biotechnology. Then there is another definition. It describes a precise process in which scientific techniques are used to develop useful and beneficial plants. According to the Council of Biotechnology and Information, then a process to produce genetically modified plants by removing genetic information from an organism, manipulating it in the laboratory, and then transferring it to a plant to change certain of its characteristic features. So this is known as biotechnology. Next, plant biotechnology allows for the transfer of a greater variety of genetic information in a more precise and controlled manner. So इससे हम जो information है उसको controlled और precise manner में change करते हैं. We can alter the genetic information by using biotech.
There is another definition by European Federation of Biotechnology. According to European Federation of Biotech, biotechnology is integrated use of biochemistry, microbiology and genetic engineering sciences in order to achieve technological applications of the capabilities of microorganisms, culture tissue, cells and part thereof. So ये एक blend है टेक्नोलॉजीज़ का, बहुत सारी साइंसेस का, लाइक वी है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंसेस का, जिसमें हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कल्चर टिश्यू, सेल्स एंड पार्ट्स. So this is biotechnology according to European Federation of Biotech. Next comes historical background. So first genetic plant was developed in 1980. तो जो पहला genetic plant था वो develop हुआ था 1980 में, और जो first genetically engineered crop थी that was tobacco plant, reported in 1983, and the first transgenic crop developed in India was BT brinjal. और भारत में जो पहली transgenic crop है जो develop हुई थी that was BT brinjal. Then in this plant, a desired gene was isolated from one bacteria named as Bacillus thuringiensis. तो इसी से इसका नाम BT पड़ा है. The major GM crops include soybean, maize, cotton and canola. So we have different types of major genetically modified crops, जिसमें soybean है, cotton है, maize है, canola है. Then we have some herbicide tolerant. ये जो crops हैं, these are herbicide tolerant and insect resistant. तो इस पे ना ही herbicide का कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही insect का कोई effect पड़ता है. And molecular biology makes large part of the plant biotechnology. तो molecular biology का बहुत important role है जिसमें हम DNA और genes के बारे में study करते हैं. So it is a larger portion of the plant biotech. Next comes need of biotech. Why we need biotechnology? Firstly, to increase agriculture productivity because we have larger population to feed, so that's why we have to increase our crops to gain maximum yield. और इसमें जो help करती है सबसे ज़्यादा that is biotech. So to enhance breeders' ability to make improvements in crops and livestock, जिससे हम domestic animals और crops को improve कर सकते हैं so that they can resist the changes in environment. To enable improvements that are not possible with traditional processings of related species alone. तो जो हमारे traditional methods हैं उनसे वो जो changes हैं they are not possible. So that's why we need this modern technology that is biotech. Next, this biotechnology is not a single science, it is a blend of technologies. So it includes various other branches of sciences. So it is an interdisciplinary activity of basic sciences and engineering. So it involves microbiology, chemistry and biochemistry. It involves genetics, that comes under molecular biology, then cytology, molecular biology, then immunology and physiology. Next comes scope of biotech. So biotechnology का जो scope है वो बहुत broad है because plant biotechnology has rapidly emerged as an area of activity having marked impact on all domains of humans. So बहुत ज़्यादा impact पड़ता है इसका human life पे, और इसका बहुत ही wide scope है in the field of plant sciences. Then it involves its use in food processing, protecting the environment, then production and productivity of various products, industrial products, then economy, then human health by producing certain drugs. Then it also provides employment. So being new and emerging field, it requires huge infrastructure and human resource. So there is a lot of scope in employment sector also in the field of biotech. Next comes application of biotech. So biotech plays very important role in production of firstly primary and secondary metabolites. तो जो plants के primary और secondary metabolites हैं उन्हें हम अपने benefits के लिए use कर सकते हैं. We have plant metabolites like primary metabolite which are directly involved in metabolism, like we have carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. तो ये directly involved होते हैं in the growth. While secondary metabolites, it includes alkaloids, phenolics, steroids, essential oils, lignins, then antibodies. They are produced for defense purposes. तो ये plant को protect करने में help करते हैं. So these secondary metabolites also performs wide range of biological applications, includes in pharmaceuticals, cosmetics, food, agriculture and farming. So by using biotech we can use these products. Next, enzyme production.
So we can produce enzymes, and this is the biggest emerging industry, and its annual market value is about 1.6 billion US dollars. तो एंजाइम प्रोडक्शन की जो एनुअल मार्केट वैल्यू है वो लगभग 1.6 बिलियन डॉलर है, US डॉलर है. एंड वी आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एंजाइम्स, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स बहुत सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन में वर्क कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीएज है, दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू वर्क मोर एफिशिएंटली इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन. तो हम प्रोटीज को यूज़ करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में. देन जो एंजाइम्स माइक्रोबियल ओरिजिन के हैं, माइक्रोबियल ओरिजिन के एंजाइम्स प्रेफर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट ओरिजिन एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल वी हैव एन एंजाइम दैट इज़ नेम्ड एज काइमोसिन. एक एंजाइम है काइमोसिन, और ये जो एंजाइम है इट इज़ यूज फॉर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग. तो इसे यूज़ किया जाता है चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ production of human growth hormone. As we know that there are some children who suffered with stunted growth due to deficiency of this growth hormone, जिसे हम कहते हैं pituitary dwarfism. और ऐसे चिल्ड्रंस को अगर हम ट्रीट करते हैं विद रेगुलर ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट, और ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये मोस्टली पहले प्रोड्यूस किए जाते थे फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ डिसीज्ड पर्सन. जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, डिसीज पर्सन की पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले इस एच जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसे निकाला जाता था. देन इट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन. बट ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक, अब हम ये जो प्रोटीन है वी कैन obtain it by using some microbes like E. coli. तो E. coli में हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसका जो केमिकल नेचर है दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. सो वी कैन प्रोड्यूस this human growth hormone by using the microbes, like we have E. coli, by using this biotech. Next is production of recombinant insulin. As we know that major population of the world is suffering with this disease that is diabetes. और ये जो insulin है naturally it is secreted by our heterocline gland that is pancreas, जो कि maintain करता है blood glucose level को. और जब इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है एंड देयर इज़ नो प्रॉपर प्रोडक्शन और फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन हार्मोन, सो दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल. और इससे जो इसके रिजल्ट से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ होता है. सो फॉर दिस इनिशियली प्रीवियसली हम जो इंसुलिन डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे दैट वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ काउ, पिग्स और अदर एनिमल्स. उन्हें स्लॉटर किया जाता था और उनसे ये जो इंसुलिन है वो निकाला जाता है. बट ड्यू टू सम एलर्जीज इन ह्यूमंस, तो ये जो इंसुलिन है दैट वाज नॉट यूजफुल. सो आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब हम जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रोब्स. और वो जो इंसुलिन होता है दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और उससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती. द नेक्स्ट इज़ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. सो जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं, जैसे कुछ सीरियस डिजीज़ है लाइक वी हैव हेपेटाइटिस बी, तो ये जो वैक्सीन्स है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग HBsAg वायरल जीन इन द ईस्ट सेल. और ये जो वैक्सीन्स हैं दे आर आल्सो प्रूव्ड इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक. दैन DNA प्रॉब इन डायग्नोसिस. तो जो रिसर्चेस हैं तो बहुत सारी रिसर्च की गई है जिसमें DNA प्रोब को यूज़ किया जाता है. प्रोब इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ DNA फॉर डिजीज़ डायग्नोसिस, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस यूज़ किए जाते हैं DNA के, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द टारगेट DNA सीक्वेंस. और ये जो प्रोब होता है दैट इज़ लेवल्ड विद रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, एंजाइम्स और फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स. तो इससे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, एंड ड्यू टू देयर हाई स्पेसिफिसिटी जो अनरिलेटेड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं पैरासाइट्स के, वायरसेस के, बैक्टीरिया के, देयर कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय यूजिंग DNA हाइब्रिडाइजेशन मेथड. सो इस तरह से ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है. देन अदर एप्लीकेशन इज बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड. सो वी कैन प्रोड्यूस सर्टेन बायोपेस्टिसाइड बाय यूजिंग दिस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिससे हम अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं पेस्ट से. सो वी हैव लॉट ऑफ क्रॉप्स नाउअडेज जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं. द बेस्ट वन इज़ BT कॉटन.
जिसमें हमने जीन को लिया है एक बैक्टीरिया से, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से, दैट इंसर्टेड इन द कॉटन जीनोम, और उससे जो सैप निकलता है दैट कैन किल द इंसेक्ट्स. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल of bacterial biopesticide. Then next is production of transgenic plants. तो by using this technique we can produce plants जिसमें हम जो plant है उसके genome को alter कर लेते हैं, like we have this BT cotton जिसमें हमने एक desired segment of DNA लिया है bacteria से, that is inserted in the plant genome of cotton, and that plant is known as transgenic plant or genetically modified plant. So we can alter the genome of plant and we can insert the desired fragment of DNA जिससे हम plant की efficiency को increase कर सकते हैं. That plant is known as genetically modified plants. So these are some major applications of biotech. Next comes old biotechnology. Humans start exploiting the use of microbes for the preparation of cheese, wine, or other organic acids to obtain certain antibiotics. So this is very primitive or old science, old biotechnology, जिसमें कि हम microbes की maximum जो capabilities हैं उनको exploit करते हैं. So that comes under this old biotechnology. So man started employing organisms as 5000 BC to 10,000 BC for making wine, vinegar and curd etc. तो ये जो चीज़ें बनाते थे इसमें हम microbes को use करते थे. So that is a part of old biotech. So such processes which are based on capabilities of microorganisms, जिसमें microorganisms को use किया जाता है, that is commonly considered as old biotechnology. उसे consider करते हैं हम old biotechnology. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें यूज़ ऑफ माइक्रोब्स को हमने बहुत ज़्यादा स्केल में किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल स्केल्स, जो कि पार्ट है ओल्ड बायोटेक का. फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम फंगस एस्परजिलस नाइगर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सिट्रस ऑर्चर्ड इन द वर्ल्ड वार वन. तो इसके लिए हमने जो सिट्रिक एसिड दैट इज obtained फ्रॉम दिस एस्परजिलस नाइगर, देन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन which was once called as wonder drug, that is obtained from fungus mold Penicillium notatum. So these all products which were obtained by using microbes comes under this old biotech. Next comes modern biotechnology. So it includes the use of rDNA, that is recombinant DNA technology, जिसमें हम microbes की maximum जो capabilities हैं उनको exploit करते हैं. So improving the natural capabilities of microorganisms firstly, then making them capable of novel process and discovering microorganisms with new capabilities by using this rDNA technology, that is recombinant DNA technology, which forms the basis of this modern biotech. This recombinant DNA technology allows man to modify organisms, so we can get a desired segment of gene and that can be copy and pasted in the different organisms to obtain different products and make these organisms or microbes highly valuable. So जैसे हम जो genes हैं, desired segment of genes है, उसको copy paste कर सकते हैं किसी और organism में to obtain the maximum benefit. So that comes under this new biotechnology. For example, we have human insulin genome जो transfer किया गया है in the E. coli. I have told that earlier we have to slaughter the animals और उनके pancreas से हम जो इंसुलिन है उसको निकालते थे, और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. दैट इंसुलिन क्रिएट सम एलर्जीज इन द ह्यूमंस. सो nowadays we prepare this insulin from the microbe E. coli, और ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है that is produced by the genetically engineered microbes, जो कि डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है. Then we have produced various crop varieties जो कि यूज़फुल हैं production wise, and they are stress tolerant by using this modern biotech. Then there is production of transgenic plant which are resistant to viral infection. For example, we have one plant disease that is caused in the papaya ring rot virus. तो ये जो plant है papaya plant is transgenically modified so that it can be resistant to this virus, that is papaya ring spot virus. So these all the things comes under this modern biotechnology. So there's difference between old and new biotechnology. In case of old biotechnology, we use the natural ability of microorganisms
जो नेचुरली एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको एक्सप्लॉइट करते हैं टू गेन द बेनिफिट. While in case of new biotechnology, we use this recombinant DNA technology. So this is the basis of new biotechnology. Then it is this old biotechnology is a simple technique. इसमें हम जैसे कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, लाइक वी हैव फर्मेंटेशन, जिससे हम योगर्ट बनाते हैं या फिर चीज़ बनाते हैं या फिर अचार बनाते हैं या फिर हम वाइन बनाते हैं. सो दीज ऑल प्रोसेसेस कम्स अंडर दिस ओल्ड बायोटेक. While this new biotech is a new technique, it involves production of phonetically modified microbes, plants, animal, and production of insulin. Like other thing, we have human growth hormone that can also be produced with the help of this new biotech. So these are the main differences between old biotech and new biotech. Next comes plant tissue culture. So this is again very important part of plant biotech. So plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, tissues, organs under sterile condition. So ये जो condition है, that is sterile condition, this is very very important factor for tissue culture. On a nutrient culture medium is of non-composition. So we have to make this nutrient medium, और इसकी जो composition है that is fixed. We use different mediums, और इसके अंदर ही हम plants को grow करते हैं from a particular plant part that can be leaf, flower or root or any other part, जिससे कि बहुत सारे plants को हम produce कर सकते हैं. That comes in this branch, that is plant tissue culture. So plant tissue culture relies on the fact that many plant cells have ability to regenerate a whole plant. So that capability of the plant cell is known as totipotency. Totipotency means capability or capacity. So किसी भी प्लांट सेल की कैपेसिटी जिससे कि वो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी. सो सिंगल सेल प्लांट सेल्स विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, पीसेज ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट्स, इनको हम ऑफन यूज़ करते हैं टू जनरेट अ न्यू प्लांट on a culture media. Culture media is a nutrient medium, जो ये liquid material है, which contains all the nutrients which are required for plants normal growth and development. So ये जो culture media है, that is made up of given required nutrient concentration and plant hormones. So this is prepared by using particular concentration of PGRs and hormones. So plant tissue culture is used widely in plant sciences, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर. तो इसको हम इन जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, दैट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट कम्स माइलस्टोन इन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक माइस है, दैट वाज क्रिएटेड बाय एलिजाबेथ लेसी एंड फ्रैंक कॉन्स्टेंटिनी. तो इन्होंने सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया था, जिससे कि जो डिजीज़ को स्टडी करना है ह्यूमंस के और जो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स है, दैट वाज वेरी इजी. सो दिस फोटोग्राफ शोज एलिजाबेथ लेसी एंड फ्रैंक कॉन्स्टेंटिनी. दे हैव published one book that is manipulating the mouse embryo. So these are the scientists which are involved in writing this edition. This is the second edition of book. The next comes DNA microarray. तो ये जो DNA microarray है, it is again a technique which was developed by Organlich and Cobrin. तो इसमें हम बहुत सारे जो जीन्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं. We use a device which is made up of a semiconductor chip. इसे हम जीन चिप भी कहते हैं. So we can observe the multiple genes simultaneously और उसके products को हम इसमें देख सकते हैं. So this is DNA microarray. The next comes DNA fingerprinting. This method was developed by Alex Zephyr. इसमें हम DNA को extract करते हैं from any sample, then इसको हम PCR से रन करते हैं, then we will produce lot of DNA, और उसके बाद restrictions enzyme इस पे feed करते हैं, then it is run under this gel electrophoresis. इसके बाद इसमें slightly bands बनते हैं, and these bands are observed. So this technique was developed by Alex Zephyr. Here's the person Alex Zephyr. Next comes PCR, that is polymerase chain reaction. This process was developed by Carey Mullis and his colleague at CETUS organization. तो इसमें 3 processes involved होते हैं, that is denaturation, annealing and extension. So this was a milestone, Carey Mullis, जो कि जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला है.
दैन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये एक जॉइंट वर्किंग एक्सरसाइज थी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि एक मिशन था टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. So human genome project, tracking down the life code. Then the first cellular organism to be fully decoded, that was a bacteria, gram-negative bacteria, bacillus, that is Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae. तो ये जो पहला माइक्रोब है जिसका जो जीनोम है जिसको फुली डिकोड किया गया था. नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन थेरेपी प्रोडक्ट इज जेंडीसीन. सो जो पहला जीन थेरेपी का प्रोडक्ट है दैट इज जेंडीसीन. इट इज़ यूज फॉर टू क्योर हेड एंड नेक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. Next comes Norman Borlaug in 1960, considered as father of green revolution. इन्होंने dwarf wheat variety की डेवलपमेंट की थी with an increment production by 70% lead to green revolution. Then first जो recombinant DNA organism था that was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer. इनको क्रेडिट जाता है जो पहला recombinant DNA organism बनाया गया that was prepared by Stanley Cohen and Herbert Boyer. Then first genetically जो modified food product है that is a flavor saver tomato approved by FDA. Then we have another food product that is golden rice जो कि fortified है. Fortified means which contains some nutrients or additional minerals, like we have this beta carotene that is a source of vitamin A. So that was developed by German and Swiss scientists. Then we have Arabidopsis thaliana, that is the first plant जिसका कि पूरा का पूरा जीनोम सबसे पहले सीक्वेंस किया गया है. So this is the photograph of Norman Borlaug, so considered as father of green revolution. Then recombinant DNA technology जो development की है that was done by Stanley Cohen and Herbert Boyer. And the first transgenically engineered crop was the flavor saver tomato. So ये जो flavor saver tomato है इनिशियली इसकी जो शेल्फ लाइफ होती थी दैट वाज वेरी लेस, बट इट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसमें कि एक एंजाइम है दैट इज़ पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. वो जो एंजाइम है वो बनता नहीं है, सो इसकी जो शेल्फ लाइफ है दैट गेट्स इंक्रीज्ड. सो दिस वाज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. और इसमें जो इसकी जो कैपेबिलिटी थी टू स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दिस वाज अचीव्ड बाय अनदर जीन दैट ब्लॉक्ड द जीन प्रोडक्शन of an enzyme which caused rotting, that is polygalactourinase. Due to various commercial problems, the tomato are no longer available. So that's why जो ये enzyme है इसकी production को stop किया गया था. That's जिससे कि जो shelf life है that gets increased. Next comes genetics of golden rice. So golden rice was created by transforming rice with 2 beta carotene synthesizing genes. और ये जो genes हैं एक तो plant से लिए this one that is narcissus जिसे daffodil बोलते हैं, and second gene is obtained from soil bacterium Arvenia. So first gene is Psi gene, that is phytoene synthase gene जो एक एंजाइम के लिए कोड करती है फ्रॉम डैफोडिल. ये obtain किया गया है ये जीन डैफोडिल से. दिस इज नार्सिसस pseudonarcissus which encodes for phytoene synthase और ये कन्वर्ट करता है geranyl diphosphate into phytoene. Second gene is obtained from, that is CRT1 carotene desaturase. It is obtained from soil bacterium Arvenia iridovora. तो इससे ये जीन लगी है that encodes for phytoene desaturase और ये कैटलाइज करती है कन्वर्जन ऑफ phytoene into lycopene. पहले जो फर्स्ट जीन है that is Psi gene ये इंसर्ट की गई थी मेज से, but after that it is obtained from this daffodil. और मेज वाली जो Psi gene that is substituted with the Psi gene of daffodil, जिससे कि जो बीटा कैरोटीन का कंटेंट है that increased 23 times, that gets increased by 23 times, and this was known as golden rice और इसे golden rice कहा गया था, and it was published by Payne et al. In 2005. So this is a flow chart. So firstly geranyl diphosphate और यहाँ पे जो एंजाइम यूज दैट इज phytoene synthase जो कि daffodil से लिया गया है. इट कन्वर्ट्स दिस GGDP into this is GGDP into phytoene और उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम दैट इज obtained from soil bacterium Arvenia जो कि है phytoene double desaturase और इससे कन्वर्ट हो जाता है ये zeta carotene में. फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू lycopene एंड फाइनली it is acted upon by this enzyme that is lycopene cyclase जिससे कन्वर्ट हो जाता है बीटा कैरोटीन में, that is the precursor of vitamin A.
So this was the wild type of rice, then it was the golden rice first. Finally, जब daffodil से gene ली गई SI gene, then it is converted into this golden rice too. Next comes milestones in plant tissue culture. So firstly, concept of pluripotency, that is the potential of a cell to produce a whole plant. It was given by Schwein and Schlinden. The next, Haberland, who is considered as a father of plant tissue culture. He was the first person to attempt plant tissue culture. In a father of plant tissue culture भी कहा था, that is Gottlieb Haberland. Next is Henning. He is the first person to attempt an embryo culture. जिन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियो कल्चर किया था सिलेक्टेड क्रूसीफर्स का. नेक्स्ट कम्स लाइबैश. इन्होंने एम्ब्रियो कल्चर किया था अप्लाइड इन इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस ऑफ लाइनम. नेक्स्ट इज गॉथरेट. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले किया था इन विट्रो कल्चर ऑफ कैम्बियम का इन विट्रो कल्चर. नेक्स्ट इज ब्राउन, जिन्होंने सबसे पहले इन विट्रो कल्चर किया है क्राउन गॉल टिश्यू का. इट इज़ अ डिजीज़ इन प्लांट्स जो कि ट्यूमर की तरह दिखता है. So इसका सबसे पहले टिश्यू कल्चर किया है ब्राउन ने. This tumor-like structure known as crown gall disease. The next comes Skoog. He was the first person to do in vitro culture of tobacco. तो tobacco का सबसे पहले जो in vitro culture किया वो किया Skoog ने. Next comes Miller. उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया है काइनेटिन, that is a type of cytokinin, and it's very important hormone for tissue culture. Then Guha and Maheshwari. Guha and Maheshwari, they were the first person to प्रोड्यूस फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर. जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट हैप्लॉइड दूरा प्लांट प्रोड्यूस किए थे फ्रॉम पोलन ग्रेन. तो सो हैप्लॉइड प्रोडक्शन का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज टू गुहा एंड महेश्वरी. This was all about for our today's discussion about biotech, its introduction, its historical background, some milestones in biotechnology. Hope people get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in the comment section. Thanks for watching. Have a great day.